Hello everyone. Today I will discuss certain community health nursing related questions, multiple choice questions, which is common for ANM, GNM, BSc nursing students, post basic nursing students, MSc nursing students. And even though like this type of question is being asked in the certain competitive exams, such as in CHO exams and all, so I think so this video will be helpful for you. So let's start today. First question is immunity means. So there are the four options are there. First, disease resistance capacity, disease producing capacity, treatment of disease, none of the above. पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेकंड ऐसी क्षमता जिससे कि डिसीज उत्पन्न हो सके, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसका उपचार, ट्रीटमेंट डिसीज का, या डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द डिसीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी. सो इम्यूनिटी इज द रोग प्रतिरोधक क्षमता, और दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. Now next question is, according to national immunization schedule, immunization for how many diseases is done in infants? जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें हम बच्चों को, जो इन्फेंट्स हैं, उनको कितने रोगों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं टीकाकरण के माध्यम से. सो ऑप्शन, देयर आर फोर ऑप्शंस, 4, 5, 6, 7. So correct answer is the option C, that is the 6 killer disease के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है इन इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. So we are protecting the infants against 6 killer diseases. So next question is now, which of the following disease is not transmitted by airborne droplets? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि हवा के माध्यम से नहीं फैलती हैं? तो ऑप्शन ए मीसल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द पोलियोमाइलाइटिस. तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है ए, बी एंड डी, मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, दीज थ्री आर respiratory infections and these are spread by the airborne droplets. So correct answer is the poliomyelitis. Now fifth question is, MMR vaccine provides protection against all of the following disease except. MMR वैक्सीन जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ऐसे कौन सी डिसीज़ हैं जिससे MMR वैक्सीन जो है जिसका प्रोटेक्शन नहीं करती है? मम्प्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला, मीसल्स. तो द MMR का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द मम्प्स, मीसल्स, रूबेला. तो ये तीन को से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट जो आंसर बी है दैट इज़ द राइट आंसर हियर, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, बिकॉज MMR वैक्सीन क्या है? इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस. तो करेक्ट आंसर इज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस. नाउ नेक्स्ट इज द, in a patient of fever, fastigum is term given to which of the following period? अगर कोई पेशेंट फीवर से, बुखार से पीड़ित है, तो फास्टिगम हम टर्म कब यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए ऑनसेट ऑफ फीवर, ऑप्शन बी
when body temperature has reached its maximum and remain constant. Option C, when the body temperature is gradually returning to normal. Option D, when body temperature is suddenly returning to normal. बुखार के ऑनसेट में, या जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना मैक्सिमम लेवल पर है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वो मतलब हाई लेवल पर ही बना हुआ है टेम्परेचर. या ऑप्शन सी कि बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में वापस आ रहा है. या ऑप्शन डी, जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट. मतलब उसका जो शारीरिक तापमान है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच के उस पर ही कॉन्स्टेंटली बना रहता है और वो नीचे नहीं आता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं फास्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, और वी कैन से हु इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी. So there are the four options: Henry Ford, Henry Dunant, Henry Brown, Henry Clyde. So correct answer is Henry Dunant. Next question: quarantine means healthy individuals after exposure to disease are kept under observation for longest incubation period of that disease. Quarantine is a method of primordial prevention, primary prevention, secondary prevention और tertiary prevention. So जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन में क्या करते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं अगर वो किसी भी डिसीज़ से में के एक्सपोजर में आ गए हैं तो उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है. तो वो किस के अंदर आता है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आता है ये प्रक्रिया, कि प्राइमरी प्रिवेंशन, की सेकेंडरी प्रिवेंशन, की टर्शियरी प्रिवेंशन. सो करेक्ट आंसर इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, बिकॉज प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, यहाँ वी आर हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर द एस्पेक्ट ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन. जबकि सेकेंडरी प्रिवेंशन के क्या है, दैट इज़ द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. एंड टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है, दैट इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप केयर. एंड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या आता है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. सो बिकॉज क्वारंटाइन में क्या है, ऑलरेडी डिसीज एक्सपोजर हो चुका है एंड दिस कम्स अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन. तो क्वारंटाइन कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन. All of the following are example of two-way communication except group discussion, role playing, panel discussion, symposium. इनमें से कौन से ऐसा एग्जाम्पल है जो कि टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है. ग्रुप डिस्कशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है, पैनल डिस्कशन में भी टू वे कम्युनिकेशन होता है एंड सिम्पोजियम में भी टू वे कम्युनिकेशन होता है. तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी, दैट इज द रोल प्लेइंग. Which of the following is not a natural method of contraception? Calendar method, progesterone only pills, coitus interruptus, sexual abstinence. इनमें से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स
नहीं है। तो कैलेंडर मेथड एज यू नो ये हमारे नेचुरल मेथड में आता है। Coitus interruptus and sexual abstinence, this also comes under the natural method, but progesterone only pills, answer B is the correct answer, that not comes under the natural method of contraception, it comes under the chemical method of contraception. The nurse know that the most positive evidence of active tuberculosis is positive skin test result, a raised total leukocytes count, positive chest x-ray findings, positive sputum culture findings. तो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का सबसे मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस क्या होता है? एक्चुअली ये सभी इन्वॉल्व होते हैं ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, बट जो मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या होता है? दैट इज़ द पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज फीमेल डेथ पर। जो हम MMR रेट एक्सप्रेस करते हैं या उसका जो फार्मूला लगाने के बाद जो हम डिटेल्स निकालते हैं वो हम कितने लोगों की बेसिस पर निकालते हैं? दैट इज़ द 1000 लाइव बर्थ, 1000 प्रेगनेंसीज, 1 लाख लाइव बर्थ और 1 लाख प्रेगनेंसीज। So correct answer is 1 lakh live birth. Which of the following is blood-borne infection? Wales disease, hepatitis B, plague, चिकनगुनिया। इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो कि ब्लड के माध्यम से इन्फेक्शन इसका फैलता है? तो दैट इज़ द आंसर बी, दैट इज़ द हेपेटाइटिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज? चिकनगुनिया, मलेरिया, रेबीज, एड्स। इनमें कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसको कि हम जूनोटिक डिसीज़ कह सकते हैं? जूनोटिक डिसीज़ क्या होता है? विच इज स्प्रेड बाय एनिमल्स। सो चिकनगुनिया, मलेरिया, रेबीज, एड्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज रेबीज, बिकॉज रेबीज इज this spread by the dog bite. This comes under the zoonotic disease. The best recommended BMI body mass index for adult is 15 to 19, 19 to 25, 25 to 30, 31 to 35. The correct answer is 19 to 25. That is the best recommended BMI for an adult. Which of the following personnel act as a resource person for the training of ASHA? ANM, LHV, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बोथ A and C. So correct answer is A and C, that is the ANM and Anganwadi both are functioning as
resource person for the training of ASHA. ASHA is the accredited social health activist. ANM is auxiliary nurses midwives. LHV is lady health visitor. Most common opportunistic infection in HIV infected patients in India is Pneumocystis pneumonia, tuberculosis, Kaposi sarcoma, cryptococcal meningitis. तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन बताना है। मीन्स जो पेशेंट हैं जो HIV इन्फेक्टेड हैं और ऐसे पेशेंट जिनको HIV हो चुका है उनको ऐसी कौन सी डिसीज़ है वो जो बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो हियर आंसर बी, दैट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। तो मोस्ट ऑफ द HIV पेशेंट्स में प्रायतः देखा गया है कि उनको जो है ट्यूबरक्लोसिस आसानी से हो जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया। In following which is a bacteriostatic drug? Ethambutol, rifampicin, streptomycin, pyrazinamide. So correct answer is that is the ethambutol. In following which is bactericidal drug? Streptomycin, rifampicin, pyrazinamide, and all of these. So correct answer is all of these, that is the bactericidal drug, because bactericidal drugs क्या है? Drugs which kills the bacteria. So all three vaccines are the bactericidal drugs. Now next question, if a mother carry her 18-month-old baby in the hospital who has not been immunized even with a single vaccine, at this time which vaccine can be given to the child? DPT first, OPV first, measles, BCG. So correct answer is BCG. BCG is the Bacillus calmette-guerin, which gives protection against tuberculosis. Next question, before administering vaccine, the injection site should not be cleaned with spirit because वैक्सीन देने के पहले जब हम साइट क्लीन करते हैं तो उसमें स्पिरिट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट मे कॉज हार्मफुल रिएक्शन, इट विल कॉज नेक्रोसिस, इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन. देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न. So correct answer is it may cause destruction of live organism present in vaccine. If an infant has not been immunized with BCG at birth or with DPT first, then these should be avoided
These should be given at the age of 5 years. These can be given at any time up to the age of 1 year. Both of BCG and DPT first should be given with DPT second and DPT third. These can be given any time up to the age of 1 year. Now next question. BCG vaccine is given always in upper aspect of left arm. What is the reason behind this? It is more effective in left arm. In right arm, it may cause paralysis. To maintain uniformity so that it could be easily identified whether the baby is immunized or not. It is not essential, it can be given in right side. So correct answer is answer C, to maintain uniformity so that it could be easily identified whether the baby is immunized or not. तो जो BCG वैक्सीनेशन हम करते हैं यूजली वी आर सेलेक्टिंग लेफ्ट आर्म अपर एस्पेक्ट deltoid region because so that it can be easily identified whether the child is vaccinated or not for BCG vaccination. Purpose of Gram Swasthya Yojana includes to reduce IMR and MMR. IMR is the infant mortality rate and MMR is the maternal mortality rate. To encourage death and birth registration. To prevent marriages in early age. All of these. So correct answer is all of these. So Gram Swasthya Yojana includes reduce IMR and MMR, encourage death and birth registration, and also prevent early age marriages. So these three are the purpose of Gram Swasthya Yojana. Yashoda Yojana has been started under India-Norway Partnership Initiative, India-America Partnership Initiative, India-Denmark Partnership Initiative, India-Australia Partnership Initiative. So correct answer is answer A, that is the India-Norway Partnership Initiative. Next question, what is the main function of Yashoda? To provide care to pregnant women and her newborn. B. To provide care to old men. C. To provide health services to people during disaster like earthquake, flood, etc. D. To train Asha and Anganwadi workers. So correct answer is option A, that is to provide care to pregnant women and her newborn baby. Under Janani Suraksha Yojana, in urban area, a mother who delivered in government hospital is paid rupees. Option A 1400, option B 1000, option D C 800, option D 1600. So correct answer is option B, that is the 1000 rupees.
Under NRHM full form is National Rural Health Mission. One ASHA covers the population of 500,000, 2,000, 4,000. The correct answer is 1,000. National Rural Health Mission was started in April 2007, April 2002, April 2005 या September 2005. The correct answer is option C, that is April 2005. In following, which is not a component of National Rural Health Mission? आशा, जननी सुरक्षा योजना, अंडर 5 क्लिनिक, RCH प्रोग्राम. इन फॉलोइंग ऑप्शंस में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो आशा, जननी सुरक्षा योजना and RCH program. These three are the components of National Rural Health Mission. So correct answer is option C, that is under 5 clinic is not a component of NRHM or National Rural Health Mission. Which of the following is not an advantage of intrauterine contraceptive devices? निम्न में इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का कौन सा एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन ए, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, बी, सिंप्लिसिटी ऑफ इंसर्शन, सी, कैन बी यूज्ड इफ प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, डी, नो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स. So correct answer is can be used if pregnancy is suspected. Now question 33. Waste from laboratory cultures and specimens of microorganisms are discarded in red bag, yellow bag, blue bag or black bag. Correct answer is yellow bag. Chikungunya fever is a bacterial disease, viral borne disease, protozoal disease or fungal infection. So correct answer is that is viral borne disease. Chikungunya is a viral infection. Characteristics features of chikungunya are fever, pain in abdomen, skin rashes, high fever with severe articular pains in the limbs, high fever, hemoptysis, chest pain, weight loss, diarrhea, fever, pelvic pain. So correct answer is answer B, high fever with severe articular pains in the limbs. Chikungunya fever is transmitted by Plasmodium, Aedes aegypti,
dog bite, housefly. Correct answer is Aedes aegypti. Which of the following diseases has the shortest incubation period? What is incubation period? Incubation period is the period the entry of pathogenic organisms into the human body till the appearance of first sign and symptoms of that disease is known as incubation period. So here you have to tell which disease is having shortest incubation period. So options are measles, cholera, staphylococcus, food poisoning, salmonella, food poisoning. So correct answer is staphylococcus, food poisoning. In following, which is not a chemical disinfectant? Phenol, cresol, formalin, sodium. Correct answer is option D, that is sodium. Opportunistic infections in HIV infected individual occurs when CD4 T cells count falls below 400, 200, 800, 500. Correct answer is answer B. Examples of dry heat infection is burning, boiling, bleaching powder, all of these. Correct answer is burning. Next question. Example of natural disinfectant is sunlight, burning, boiling, phenol. Correct answer is option A, sunlight. Negri bodies are seen in rabies, HIV encephalitis, tuberculosis, herpes encephalitis. So correct answer is option A, rabies. In this we are seeing Negri bodies. Killing of infectious agent outside the human body by direct exposure of chemical or physical agent is known as disinfectant, deodorant, disinfection, bacteriostatic. Correct answer is option C, disinfection. The
articles that convey infections are known as. ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा इन्फेक्शन या संक्रमण फैल सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टरीज, फोमाइट, ऑटोक्लेव, ऑल ऑफ दीज. Correct answer is option B, fomite. Through fomite, that or we can say infectious articles or material through which that infection is easily transmitted to the another person. If other person or healthy person is using the same utensils or the same material or articles, in that case this type of infection is transmitted to that person. So इस तरह के infectious materials को we are saying fomite. Transmission of infectious disease from mother to fetus is known as. Droplet infection, vehicle borne infection, fomite borne या vertical transmission. So correct answer is option D, vertical transmission. The diseases या infections which are transmitted from mother to the fetus is known as vertical transmission. The mode of transmission in which disease are transmitted due to coughing, sneezing or talking of infected person is droplet infection, transplacental, inoculation into skin or mucosa, or vector-borne transmission. So while disease are transmitted through coughing, sneezing or talking of infected person, or it is infecting to the healthy person, that is known as droplet infection. So option A is the correct answer. In following which is not a direct mode of transmission of communicable disease? Droplet infection, transplacental, inoculation into skin or mucosa, vector-borne transmission. So correct answer is vector-borne transmission. So here direct mode of transmission is droplet infection, because here by coughing, sneezing like this, or through airborne, this type of airborne diseases are spread, that is comes under the direct mode of transmission. Transplacental, from mother to fetus, this also comes under the direct mode of transmission. Inoculation into skin or mucosa, that also comes under the direct mode of transmission. So vector-borne disease is not comes under the direct mode of transmission. That is why this is the correct answer. A person who harbors the disease agent without having any outward sign and symptoms is known as. A person who is having the pathogenic organism in the body but he is not showing any sign and symptoms of that particular disease. So like that type of person we called as patient, carrier, isolation, or vector. So correct answer is carrier. Question 49. An epidemic which is spread from country to country or over the world is known as.
epidemic, endemic, pandemic, isolation. So correct answer is pandemic. The constant presence of disease within a geographical area is known as. जब हमें किसी भी geographical area और village और urban area anywhere we are seeing constantly some type of cases it is present, maybe diarrhea. After some time again we are seeing the diarrhea patient in the same this geographical area or community or urban area. Again after some time we are seeing the same type of cases or diseases. So like that type of diseases are known as epidemic, endemic, pandemic, isolation. So that is the correct answer is the endemic. When disease is constantly present in a particular community or urban area or any geographical area, that is known as endemic. So thank you very much. Today we had seen nearly 50 questions and I hope this video will be useful for you. If you are having any queries, please you can message me, and in the comment box you can write your queries. Okay, thank you so much.